Okay, so good evening, everyone. Very good evening to all of you. First of all, let me confirm that I am visible and audible to you. Okay, so yes, okay, so since I am visible and audible to you, as I can confirm from here, so let us start the session, and one by one, I hope that other people will join. So let us start the first news related to science and technology. This first news is basically related to trans fats. Okay, and as you know that trans fats are basically related to our health. So this is not only the portion of science and technology, you can say also the health part is concerned here. So with this, I would like to tell you what is given in news and what we have to discuss. Here it is in the news that WHO warns 5 billion people are still unprotected from trans fats and can have heart disease. So, what kind of question could be asked to you? I hope that you understand from this news here that particularly if World Health Organization or WHO is warning people to get rid of trans fats, the use of trans fats, and why it is so? Because it basically causes certain heart diseases. So UPSC can expect from you that you will be very much aware about such kind of fats, because it is also a part of our nutrient. When we concerned about fat, it is also a part of our nutrient, and if you are aware of fat and trans fat, obviously you must be aware about the health causes which is caused by these trans fats. Okay, so that is why it is important, and I hope that you will understand the things which are discussed here. So the things which are discussed here, I must tell you. Recently, a new report from WHO has found that nearly 5 billion people worldwide remain unprotected from harmful trans fats, which can increase the risk of heart disease and death. So, from here, you can infer that actually trans fats cause various kinds of heart diseases. There may be different kinds of heart diseases, but the thing is ensured that trans fats cause a risk of heart disease. Okay, and it also causes death. WHO first called for the global elimination of industry produces trans fats in 2018, with a target for elimination set for 2023, and that is why again okay. Yes, Suraj, obviously, I will cover physics and chemistry later, but since this is the section of current affairs from science and technology, so here we will discuss only those things which are relevant for current affairs, right? For physics and chemistry, I will tell you that where you should join me and how I will cover you. But it is ensured by me that uh, I will cover physics and chemistry portion for UPSC in the coming days, and particularly those physics and chemistry questions which have been asked already in
previous examination, I will also discuss all those questions in those sessions, right? So I am telling here that since WHO has set a target for the elimination of trans fats globally, and its target is set for 2023. That is why for this year it is important, and it could be asked by UPSC that you have to know trans fats, and you have to know the risk attached to trans fats, and you have to know from where these trans fats are come and how trans fats are different from other fats, right? So in this way I will discuss the things. First of all, here you should remember one of the thing which could be asked in the objective kind of questions particularly. So Denmark became the first country to ban trans fats in 2003, followed by Chile, Switzerland in the next 5 years. Okay, so here Denmark, the country which is known for having giving various kinds of dairy products, and Denmark is the country from where you can see the cooperative system evolved. So in this way, okay Suraj, yes, so obviously I will complete their physics and chemistry also. Yes, Suraj, obviously. Okay, don't worry about that. I will tell you that when and where I will cover physics and chemistry, right? But you should be ensured that obviously I will cover physics and chemistry. Got it? Okay, let's start. So Denmark became the first country to ban trans fats. This must be a fact you should remember. Okay, and further you should know what are trans fats. Here I would like to tell you what are trans fats. So trans fats also known as trans fatty acids, because whenever you talk about the formation of fat, so the formation of fat takes place uh, after the combination of two things. One is fatty acid, another is glycerol. Glycerol and fatty acid when mixed up, so with that you can say various kinds of fats are formed. So in this way you can say trans fats are obviously also formed with a certain kind of fatty acids. Those fatty acids are called trans fatty acids, and those are called what? Trans fatty acids. So in this way you can say trans fatty acids should be okay. Trans fatty acids should be, remember, these are a type of unsaturated fat. Okay, unsaturated fats are those kind of fats in which there are so many of double bond and triple bond. Here you should remember, when there are so many double bond and triple bond in the combination of, in the formation of fats, this is called unsaturated fat. So these are a type of unsaturated fat that occurs naturally in small amounts. Naturally, it is not found in huge amount. It is naturally found in a very small amount, particularly in some animal based foods. That means those dairy products which are taken from animal, the meat, and you can say the flesh taken from animal. So in those kind of food you can say trans fats are present. Okay, so these trans fats are found or occur naturally in very small amounts. So how we are getting these trans fats? So there are most commonly produced industrially by adding hydrogen to vegetable oil to make it more solid through a process called hydrogenation. One should know that whenever unsaturated fat, I am writing here, unsaturated fat, unsaturated fats are are converted into saturated fats,
by the process called hydrogenation. Okay, so as I was telling that whenever we talk about unsaturated fats, okay, whenever we talk about unsaturated fat, it is a kind of fat that is basically having various double bonds and triple bonds. These double bonds and triple bonds, when converted into single bonds, they need extra hydrogen. So addition of hydrogen is called hydrogenation, and by the process of hydrogenation, the unsaturated fat is converted into saturated fat. When the fat becomes saturated, that means it becomes solid at room temperature. This is the characteristics of saturated fat. And here I am telling you that whenever trans fats are produced industrially, so industrially these are produced by addition of hydrogen, extra hydrogen to vegetable oil. Natural vegetable oil are basically unsaturated in nature, and they are made saturated by the addition of hydrogen. The process is called hydrogenation. So you have to remember that hydrogenation process is basically used for the formation of industrially produced trans fats. Trans fats range what? They raise the bad cholesterol, that is the cause of having heart disease. They raise the bad cholesterol, very low density lipoprotein and low density lipoprotein. Bad cholesterol, there are so many kind of lipoproteins. Certain lipoproteins are called high density lipoproteins, certain are called low density lipoproteins, and certain are called VLDL, that means very low density lipoprotein. So these lipoproteins are basically among these lipoproteins, low density and very low density lipoproteins are harmful to us, and these are basically involved in the formation of cholesterol. That is why the cholesterol made by having low density lipoproteins and very low density lipoproteins are called bad cholesterol. And it is written here that trans fat raise such kind of bad cholesterol, So here you have to remember that they basically causes lowering of high density lipoproteins in our body, and they raise low density and very low density lipoproteins in our body. Got it? Okay. Prolonged consumption of trans fats have risks including heart diseases, overweight or obesity, high blood pressure, diabetes, and some types of cancer. So particularly if you say whether cancer is caused by such kind of bad cholesterol, obviously it is so, because when you are consuming huge amount of trans fats regularly, so it can cause fatty liver condition, and which further converted into a certain kind of liver cancer. So certain kind of cancer can be caused, but more oftenly it is seen that by the continuous consumption of trans fats, heart diseases are caused. The person become overweight, the person shows obesity, and due to the constriction of lumen of blood pressure, high blood pressure can be caused to the person. So these kind of things can happen by the regular consumption of trans fats. So that is why WHO warned us that we should get rid of the use of this trans fats. Okay, types of trans fats based on source. Different kinds of sources are basically recognized from where we are getting trans fats. So here you should know types of trans fats are natural trans fats. We have natural trans fats. We have natural trans fats. These are called remnant trans fats. Why remnant trans fats? Because they are taken from
they are taken from the ruminant animals, those animals who are giving us dairy products. So they are taken from ruminant trans fats as they are present in small quantities in the meat and dairy products, as I was discussing earlier. So they are present in small quantities in meat and dairy products obtained from ruminant animals such as cows, sheep, cattle. You can include here buffalo and other milk giving animals. So in the dairy products of those animals as well as in their meat, okay, in their meat, these kind of trans fats are present. Okay, these types of trans fats are not generally considered harmful, okay, because they are in very small amount, and we can easily consume and easily digest such trans fats which are coming from natural resources. Okay, but here we have certain artificial trans fats which are harmful, and particularly WHO is warning about such kind of trans fats which we are using frequently. Okay, so artificial trans fats are, these are called industrial trans fats, as I told you, and they are manufactured industrially by the chemical process of partial hydrogenation or thermal treatments of edible oil containing unsaturated fatty acids, and after refining of vegetable oils and during the process of frying, you can say, the unsaturated fats or the oil is becoming continuously saturated. Okay, so if you are using oil repeatedly, as we can see in our home, that once oil is used for frying something and the oil left in the pan, so after that we actually collect that oil, and later on we will use that oil for further frying. So repeatedly using the oil present in the pan, repeatedly using oil present in the pan is becoming saturated with the time, with the repeated use. Okay, that is why it is said by doctors as well as the persons who are advising for health. So they are saying that particularly you should use oil once for a time, okay, not repeated use of an oil. That is why you should be aware about it, that in your home the oil is not repeatedly used. Okay, the oil should not be repeatedly used. They are generally considered harmful and are present in large quantities in partially hydrogenated vegetable fats. Those vegetable fats are present in the market in the form of vanaspati ghee. You have heard about dalda and other kind of brands. Okay, margarine, these are also a kind of you can say fats or trans fats which are particularly used in different kinds of formation of you can say snacks, different kinds of formation of snacks, and also for bakery purposes, the things which are contained in bakery items. So for the formation of bakery items, these kind of trans fats are used frequently in the market. Okay, now why are trans fats used in India? So obviously there are certain regions. You can take the regions because they are cost effective. Trans fats are you can say very much cost effective because they are cheaper than other types of fats and oils which we use frequently. They are cheaper from, you can say, even mustard oil. So that is why, since they are cost effective, and the people who are of lower strata means in terms of their income. Okay, so if the people of low income strata, they are coming from that thing, so they basically use these kind of fats, these kind of oil, because they are cost effective. Okay, their shelf life is more because by hydrogenation, when they are converted into saturated fat, so their shelf life become more. Okay, and the food that is made with these kind of oil, so the shelf life of food also becomes more. Okay, cooking characteristics, so these have
a high smoke point which makes them suitable for deep frying. Okay, they can be used for deep frying and other high heat cooking methods like pastries and fried foods, more flavorful and crispier. So by the use of these, you can say people wanted to prepare their food. People wanted to prepare their food in such kind of trans fats because they make the food more crispier, है ना? They make the food crispier. Okay. Further, in India, there is lack of awareness because most of the people are not aware about the risk of trans fats, risk of use of trans fats. Okay, and limited regulations. We have no certain regulations in our food safety regulations, and that is why such kind of trans fats which are industrially produced are sold in the market frequently. Okay, and the people who are not aware about their high risk, so they are using such kind of trans fats frequently, and that is why in Indian market you can say trans fats are very much present. Okay. Now come to what are the hazards of trans fat foods. So as I told you that there are certain negative effects of heart health, and particularly since they raise low density lipoprotein and very low density lipoprotein in our body, and these proteins are causes behind the formation of bad cholesterol, and when bad cholesterol deposits in the lumen of our blood cells, so it can cause heart attack. Okay, increased risks of other chronic diseases. Which chronic diseases? You can say these chronic diseases are seen in the form of diabetes, cancer and other inflammatory diseases. These are caused in these kinds of things. Okay, now see further, adverse effects on brain functions and immune system. It also hamper our immune system as well as the brain functioning, because it is said that when a person is using diet high in trans fats, they can negatively impact cognitive functions. They will not be aware about what they are thinking and what they are doing. So you can say their cognitive function becomes slow. I don't say that their cognitive function doesn't work, but you can say with the use of such kind of fats, the deposition of such kind of fats in the blood vessel causes less supply of or slow supply of blood to the brain, and this hampers the cognitive functions. In what way? So cognitive function becomes slow. Cognitive function becomes slow. In that way, it basically negatively affect the immune system. As I was telling, limited nutritional value is also there because they don't give us nutrition. Only our food become crispier, our food become a little tastier, you can say, because the taste comes with the use of these trans fats when certain thing or food items are fried in such kind of trans fats. So some of the people who basically said that food become tastier by use of these kind of trans fats. Okay, cost to healthcare system is also there. Limited regulations are there in our country, as I was telling, and it contributes to obesity. People become obese because these fats are not so easy in digestion, and that is why the fats get deposited over the body, and that is why the people become obese. Okay. Now come to the second news, which is a very important concern. It is a very important concern here. Country's first solar mission likely to be launched by June, July. It is related to the solar mission. Yes, Mamta, what you are asking? Okay, so Mamta is asking about trans fat है क्या? मीनिंग क्या है ट्रांस फैट का? देखो, ट्रांस फैट जो है, मैंने सिंपल सी एक चीज बताई कि जब आप सिंपल फैट जो होता है ना, सिंपल फैट जो होता है, उस फैट को बहुत ज्यादा यस सूरज, ऑब्वियसली यू कैन आस्क, तब तक मैं ममता के क्वेश्चन का आंसर देता हूं।
तो ट्रांस फैट का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा फैट जो कि नेचर वाइज क्या है, सैचुरेटेड फैट है, एक ऐसा फैट जो कॉमन फैट से थोड़ा सा अधिक है, और इसमें मुझे लगता है कि इस तरीके के जो फैट होते हैं उनका डाइजेशन जो है वो नॉर्मल फैट से थोड़ा सा और टिपिकल होता है, और इसलिए ये फैट जो है वो ज्यादा अवेलेबल नहीं है, आप कह सकते हैं नेचुरली। बट ऐसे फैट्स जिनको कि आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्री ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, है ना, इंडस्ट्री के थ्रू ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, आर्टिफिशियल फैट्स जो होते हैं उनको हम ट्रांस फैट की कैटेगरी में रखते हैं। ट्रांस फैट का जो पूरी मीनिंग आप लिखेंगे, लिखेंगे ट्रांसफॉर्म्ड फैट, मतलब नेचुरली अकरिंग जो फैट है, जो प्रकृति में उपस्थित फैट है, उसको हम ट्रांसफॉर्म करके एक नए सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सैचुरेटेड फैट जो है कॉमन फैट से सस्ता भी होता है, कॉस्ट इफेक्टिव जैसा मैंने बताया, और इसका यूज जो है, जो मार्केट में बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस की जाती है, फूड आइटम्स या स्नैक्स वगैरह प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसमें इसका यूज करते हैं। यस, व्हाट वाज योर क्वेश्चन सुजीत, सॉरी सूरज? यस सूरज, आपका क्या क्वेश्चन है? ओके, जब तक सूरज का क्वेश्चन आता है मैं आगे चलता हूं। ओके, रश्मि इज टेलिंग समथिंग। Okay, I will tell the technical team to give prior information for any class which is here telecasted on YouTube. Okay, obviously, I will tell them that you will be given the prior information. How to keep mind healthy? What should I eat to keep it healthy? Okay, see, healthy mind always requires very limited and very balanced food. Okay, the food items which are rich in vitamins, which are rich in protein, these kind of food items are healthy for our brain. Particularly, not only this, a little fat is also required to keep the brain healthy. Okay, but what kind of fat? So that fat should be अनसैचुरेटेड, है ना, अनसैचुरेटेड फैट जो होंगे वो अगर आप यूज करते हैं तो ज्यादा होगा। द मेजर थिंग इज व्हाट, इफ योर बॉडी इज फीलिंग एनर्जाइज्ड, अगर आपकी बॉडी में एनर्जी पूरी है ना, और आपको एक सर्टेन टाइम पर हंग्री फील होता है, हंग्री फील तब होता है जब आपके बॉडी के अंदर ऊर्जा खत्म हो जाती है। देखिए, दो चीजें हैं, इसको आप अगर डिफरेंशिएट कर पाएंगे तो आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आएगी। वन इज कॉल्ड फूड क्रेविंग एंड अनदर इज कॉल्ड स्टारवेशन, है ना। एक तो हो गया कि हंगरनेस जिसको बोलते हैं, है ना, एक तो हो गया कि आपके बॉडी के अंदर जो है वो एक भूख लग रही है। भूख लग रही है क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर ऊर्जा की कमी हो रही है, और उस ऊर्जा की पूर्ति के लिए आपको खाना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंडली क्या है कि एक होता है फूड क्रेविंग, जैसे आपको किसी अच्छे फूड की, आपके फेवरेट फूड की सुगंध आ गई, आपको लगा नहीं खाना चाहिए, आप मार्केट से गुजर रहे हैं, आपको कुछ दिखाई दे गया, खाना चाहिए। या बहुत सारे पर्सन सोचते रहते हैं, थोड़ा इस तरह से सोचते रहते हैं किसी कि कुछ खा लेना चाहिए, अभी थोड़ा सा कुछ फील हो रहा है, कुछ मन कर रहा है खाने का। तो उस तरह की चीजें जो है ना, वो क्या करते हैं कि आपके डाइजेशन को कॉम्प्लेक्स करते हैं। व्हेन योर डाइजेशन बिकम कॉम्प्लेक्स, सो बॉडी क्या होता है कि बॉडी का सारा जो फंक्शन है ना, जो मेटाबॉलिज्म का फंक्शन है, वो बेचारा लगा रहता है। जो भी न्यूट्रिएंट आप बॉडी में डाल रहे हैं या जो भी फूड आइटम डाल रहे हैं, उसके डाइजेशन और फर्दर उसके मेटाबॉलिज्म में, तो वहां पर जो काम ब्रेन की तरफ से होना चाहिए था,
वो भी एनर्जी एक्स्ट्रा किधर लग रही है, वो आपके डाइजेशन, वो आपके मेटाबॉलिज्म में लग रही है, जो फूड आपने एक्स्ट्रा लिया है। सो इसलिए बॉडी को एक तो बहुत ज्यादा फूड देने की आवश्यकता नहीं है, बॉडी को जो है जितनी रिक्वायरमेंट हो उतनी फूड दे। और फूड में ज्यादातर कोशिश करें कि जैसे अगर आप वेजिटेरियन हैं तो जो रॉ चीजें ज्यादा खा सकते हैं, क्योंकि उससे फाइबर्स और दूसरी चीजें आएंगी, ये आपके डाइजेशन को भी बढ़िया करेंगे और साथ के साथ आपका जो आप कह सकते हैं कि आपके बॉडी के अंदर जो वाटर का कंटेंट है उसको भी मेंटेन करेंगी। और साथ के साथ ये जो है आपके बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है वो नहीं जाने देंगे, क्योंकि फाइबर्स जाते तो उनसे कैलोरीज नहीं जाती, बट एट अ टाइम आपको पेट जो है वो भरा हुआ लगेगा, तो इससे एक्स्ट्रा कैलोरी भी आप बर्न कर सकते हैं, बॉडी को हाइड्रेटेड भी रख सकते हैं और अपने डाइजेशन को भी बढ़िया रख सकते हैं। जब डाइजेशन आपका बढ़िया रहेगा और बॉडी के अंदर जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट है वो पहुंच रहे होंगे, सो आपका ब्रेन नेचुरली क्या होगा, हेल्दी होगा। जहां तक ब्रेन में कुछ सर्टेन जो ब्रेन के सेल्स होते हैं जिनको आप न्यूरॉन बोलते हैं, तो न्यूरॉन के फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं कुछ फैट्स की जरूरत होती है। तो नेचुरली जैसा मैंने बताया कि अनसैचुरेटेड फैट्स जो आप लेते हैं वो आपके बॉडी के लिए बढ़िया होता है। रश्मि इज टॉकिंग अबाउट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ऑब्वियसली जितने भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, अगर उनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होंगे तो वो बढ़िया होते हैं, वो हेल्दी होते हैं। तो इस तरह का फूड अगर आप ले तो ज्यादा बेटर है ना। मैंने ये बताया फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स में जनरली सैलड वगैरह जो है वो आप अपने फूड में उसका कंटेंट जो है वो बढ़ा सकते हैं, तो इस तरीके से जो है वो ज्यादा चीजें चलेंगी। फिर पिस्ता बादाम इज ऑब्वियसली हेल्पफुल बिकॉज दे कंटेन ओमेगा 3 फैटी एसिड, बट सिंस फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कॉस्टली, सो आप बहुत ज्यादा नहीं खा सकते। खैर बहुत ज्यादा खाने की भी जरूरत नहीं है, सम यू कैन से हैंडफुल ऑफ बादाम, और यू कैन से एक मुट्ठी में जितना आ सके, छोटी मुट्ठी में, बड़ी मुट्ठी में नहीं, ऐसे नहीं पकड़ना है, बंद करके मुट्ठी में, ठीक है। तो अगर उतना आप यूज कर सकते हैं दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, वो आप ले सकते हैं, बट कोई जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि आप वही खाएंगे तो ऐसा होगा। ऐसा कहते हैं कि उसमें चूंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं उनका अमाउंट बहुत बैलेंस फॉर्म में और ज्यादा होता है, कहते हैं कि उसका यूज कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आपका डाइजेशन बढ़िया है, अगर आपकी बॉडी जो है वो हल्का फील कर रही है ना, और आपकी बॉडी में पूरी ऊर्जा है, पूरी एनर्जी है, तो आपका ब्रेन भी अच्छा काम करेगा, ठीक है। ओके, यू आर वेलकम। चलिए तो आते हैं हम सेकेंड अपने न्यूज पर। सेकेंड न्यूज इज कंसर्न विद कंट्रीज फर्स्ट सोलर मिशन लाइकली टू बी लॉन्च बाय जून जुलाई, ऑब्वियसली। तो यहां पर क्या पूछ सकते हैं आपसे, देखिए एक तो आपसे पूछ सकते हैं कि कंट्री का जो फर्स्ट सोलर मिशन है उसका नाम क्या है। इसका नाम है आदित्य L1 मिशन, फर्स्ट इंडियन स्पेस मिशन टू ऑब्जर्व सन बाय जून और जुलाई 2023 में इसको जो है वो स्पेस में भेजने की तैयारी की गई है, ठीक है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जून और जुलाई तक ये जो है वो स्पेस में भेज दिया जाए। क्या ऑब्जर्व करेगा, ये ऑब्जर्व करेगा सोलर कोरोना को। अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा कि इसमें क्या चीजें हैं, बट इट इज सेंट देयर टू ऑब्जर्व सोलर कोरोना। कोरोना क्या है, द आउटर रिंग ऑफ अराउंड द सन, जो सन के चारों तरफ एक आउटर रिंग बनेगी, उसके फोटोस्फेयर के बाहर, उसको आप कोरोना बोलते हैं। तो कोरोना में बहुत सारे फिजिकल आप कह सकते हैं कि फिनोमेनन देखने को मिलते हैं, उन फिजिकल फिनोमेनन को ऑब्जर्व करने के लिए इसको भेजा जा रहा है। ओके, नाउ रिसेंटली विजिबल लाइन एमिशन कोरोनोग्राफ, द प्राइमरी पेलोड ऑन बोर्ड आदित्य L1 was handed over to ISRO by the Indian Institute of Astrophysics। ये न्यूज में क्यों था, न्यूज में इसलिए था क्योंकि एक पेलोड जो तैयार किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा, इसको इसरो जो हमारे यहाँ प्राइमरी स्पेस मिशन चलाने वाली प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन है, इस प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया गया है कि ये पेलोड प्रोवाइड किया गया। इस पेलोड का क्या नाम है, विजिबल लाइन एमिशन क्रोनोग्राफ, है ना, VLEC, या फिर बोल सकते हैं इसको VLEC, ठीक है। अभी इसके बारे में और चीजें जानते हैं। सबसे पहले हम जाने आदित्य L1 मिशन के बारे में। इस मिशन में
सबसे पहले तो आपको ये बताओ कि ये इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन है, ये आपको याद रखना है। द नेम इज आदित्य L1 मिशन, आदित्य L1 मिशन। आदित्य इज द सिनोनिम टू द सन, राइट? सन का एक सिनोनिम है, उसका समानार्थक शब्द है आदित्य, ठीक है। लॉन्च व्हीकल क्या है? लॉन्च व्हीकल का नाम है आदित्य 1। इसका लॉन्च कौन करेगा? PSLV, है ना। इंडिया में मेजर जो स्पेस मिशंस चलाए गए हैं उसमें हमारा जो लॉन्च व्हीकल रहा है वो हमेशा कौन सा रहा है? ज्यादातर में PSLV रहा है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इसमें 7 पेलोड्स जो हैं, है ना, 7 पेलोड्स। पेलोड्स क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सो 7 पेलोड्स जो है वो लिए जाएंगे। उन पेलोड्स में से अभी रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने इसरो को जो पेलोड प्रोवाइड किया है, ये पेलोड जिसको बनाने में अच्छा खासा समय लगा, अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो दिस पेलोड इज विजुअल इमिशन, है ना, वीलेक जिसको बोलते हैं, वो प्रोवाइड किया है। ओके, उसके अलावा ये बाकी के जो पेलोड्स है, यहां पर टोटल 6 लिखे हैं मैंने। 7वां जो है एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल। So you need not to remember all the name of these payloads, but you have to remember one of the payload which is recently given to ISRO by Indian Institute of Astrophysics. वो थोड़ा important है, इसलिए आप उसको जो है वो याद रखेंगे। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन का, यानी सोलर मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज इट विल स्टडी द सन्स कोरोना, सन्स फोटोस्फीयर। सन्स फोटोस्फीयर का मतलब हो गया कि सन का जो आउटर सरफेस है उसकी स्टडी करना। क्रोमोस्फीयर, जो वहां से लाइट निकल रही है उस क्रोमोस्फीयर को स्टडी करना। सोलर एमिशंस, सन से जो हीट रेडिएशंस आ रही हैं और उसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रही हैं, उनकी स्टडी करना। सोलर विंड्स और फ्लेयर्स, जो आप कहते हैं कि सन से जो प्लाज्मा, है ना, एरे ऑफ प्लाज्मा आता है, उसकी स्टडी करना। एंड कोरोनल मास इजेक्शन, अ वेरी कंटेम्पररी यू कैन से टर्म विच इज यूज्ड इन स्पेस साइंस, इसके बारे में भी बात करेंगे। कोरोनल मास इजेक्शन, यानी कोरोना के रीजन से जो मास इजेक्शन हो रहा है उसके विषय में जो है वो स्टडी करेंगे। एंड इट विल कैरी आउट अराउंड द क्लॉक इमेजिंग ऑफ सन, राइट। मतलब ओवरऑल इसको जब स्पेस में एस्टैब्लिश कर दिया जाएगा तो ये पूरे समय जो है वो सन के साथ क्या क्या चीजें हो रही हैं, सन में, सन के इन रीजन्स में क्या क्या फेनोमेनन जो है वो देखने को मिल रहे हैं, वो सारी चीजें वहां पर जो है वो ऑब्जर्व की जाएंगी। द मिशन विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो, है ना, जैसा कि आपको पता है। फीचर्स क्या है? जो VLC पेलोड है, इसके फीचर्स क्या है? देखिए, ये है मेन पेलोड। जो 7 पेलोड है उसमें सबसे मेन है, और जैसा मैंने बताया था कि इसको बनाने में और इसका जो कॉन्सेप्ट है जो कि स्टडी करेगा पर्टिकुलरली जो कोरोनल मास इजेक्शन है उसकी ये स्टडी करेगा, और इसके अलावा जो कोरोना के रीजन के अलावा जो फोटोस्फीयर है उसकी स्टडी करेगा। उसके लिए इसको डिजाइन किया गया, और इसको डिजाइन करने में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स को लगे लगभग 15 साल। 15 साल लगे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 7 पेलोड में चूंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने शुरुआत में भी आपसे कहा यू हैव टू रिमेंबर दिस, है ना, आपको ये याद रखने की जरूरत है। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि जब हम सन से, चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो सन से हमें मिलता है, और वी ऑल नो दैट सन इज द सोल सोर्स ऑफ एनर्जी टू अर्थ, ठीक है। तो इसलिए सन से आने वाली जो भी चीजें हैं उसकी पर्टिकुलर स्टडी करना और उसकी कॉन्टिन्यूटी को स्टडी करना वो बहुत जरूरी था। सो इट विल हेल्प इन स्टडिंग द टेम्परेचर, velocity and density of corona, understand the processes that result in heating of corona, and acceleration of the solar wind. Acceleration of the solar wind. I told you that solar wind basically the flow of plasma from the sun's photosphere. सूर्य के फोटोस्फीयर से जब प्लाज्मा जो है उसका एक continuous flow चलता है तो उसको हम solar wind बोलते हैं। And it aid studies on drivers of space weather, measure the magnetic field of corona, and study the development and origin of coronal mass ejection. As I was telling कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वो क्या है? कोरोनल मास इजेक्शन, कि कोरोनल मास इजेक्शन किस तरीके से यहां पर हो रहा है उसको समझने के लिए ये मिशन भेजा जा रहा है। ओके, नाउ कम टू द थर्ड न्यूज विच इज फ्लैशिंग हियर।
It is related to artificial synapse developed for brain-like computing with industry-compatible nitride semiconductors. अब इतना पढ़ने के बाद शायद आपको समझ में नहीं आया हो कि ये चीज किसके बारे में बात कर रही है। तो यहां पर हम एक बहुत ही इनोवेटिव चीज की बात करने जा रहे हैं, जिसमें इस पर्टिकुलर चीज नाइट्राइड सेमीकंडक्टर जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा और ये बेसिकली एक तरीके का आप कह सकते हैं कि ब्रेन से मिलता जुलता कंप्यूटर जैसा सिस्टम होगा, जो कि यहां पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो नाउ come to the news. Recently, a team of scientists from Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research has developed artificial synapse for brain-like computing, और इसको हम बोलते हैं न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग। ओके, सो यूपीएससी आपसे ये पूछ सकता है कि न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग जो है इसको करने में किस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जा सकते हैं या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको थोड़ा इसका ध्यान रखना होगा। ओके, इसमें मैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहां के लोगों ने डेवलप किया, बट न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग क्या है इसके विषय में आपसे पूछ सकते हैं, तो वो मैं अभी आपके सामने डिस्कस करूंगा। कौन सा एलिमेंट या कौन सा कंपाउंड इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरीके का जो मैटर है वो इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, ये मैं आपको यहां पर डिस्कस करता हूं। They have used scandium nitride, a semiconducting material with supreme stability and complementary metal oxide semiconductor compatibility to develop brain-like computing. You have to remember here what? One thing, scandium nitride. Scandium एक एलिमेंट नाइट्रोजन के साथ उसका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, सो उससे बना स्कैंडियम नाइट्राइड। ये स्कैंडियम नाइट्राइड जो है वो यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा इस न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग के लिए। ठीक है, क्या करेगा, तो ये न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग के लिए जो स्कैंडियम नाइट्राइड का इस्तेमाल किया जाएगा, ये एक सेमी कंडक्टिंग मटेरियल है, यानी आप सिंपली बोल सकते हैं कि ये एक सेमी कंडक्टर है ना। ये क्या है, एक सेमी कंडक्टर है और इसमें बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी है और ये कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर की तरह काम करता है, जो कि ब्रेन लाइक कंप्यूटिंग है। जैसे हमारा ब्रेन जो है चीजों को समझता है और चीजों को समझने के बाद सारी चीजें जो है वो कंप्यूट करके एक रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाता है, उसी तरीके से ये भी जो है ब्रेन लाइक कंप्यूटिंग कर पाएंगे हम इस मटेरियल का या इस सेमीकंडक्टर का यूज करके। तो यहां पर ये सबसे पहले समझना है कि न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग है क्या। What is this neuromorphic computing? Inspired by the human brain and the functioning of the nervous system, neuromorphic computing was a concept introduced in 1980s. It refers to the designing of computers that are based on systems found in the human brain and the nervous system. आप सोचो कि कोई कंप्यूटर ऐसा बनाया है जिस कंप्यूटर में ह्यूमन के ब्रेन के तरह जो है वो काम करने की क्षमता हो, वो ह्यूमन के ब्रेन की तरह काम कर रहा हो, वो इस तरीके से काम कर रहा हो कि आप कहो कि ह्यूमन ब्रेन जो है जिस तरीके से सोच पाता है, ह्यूमन ब्रेन जो कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग तुरंत अपने थॉट को चेंज कर सकता है, अपने एक्शन को चेंज कर सकता है, उसी तरीके से ये कंप्यूटर भी क्या करता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंजेस ला सकता है। ये इसकी खासियत होगी। जनरली क्या होता है कि कंप्यूटर में जो चीजें प्रोग्राम्ड है, कंप्यूटर उसी के बेसिस पर काम कर रहा है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करता। तो अभी तक जो हम सोच पा रहे हैं, शायद आपके मन में भी ये चीज आ रही हो कि कहीं ना कहीं ये किस चीज से रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। ऑब्वियसली ये रिलेटेड होगा वहां से, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके सिलेबस में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको ध्यान रखना होगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें हम इसी चीज पर अभी रिसर्च कर रहे हैं और इसमें हमने बहुत सारी चीजों में सफलता भी पाई है कि हम ह्यूमन ब्रेन जिस तरीके से काम कर सकता है, हम उस तरीके से चीजों को जो है वो डेवलप करें, हम उस तरीके से चीजों पर जो है वो काम करें। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन जिस तरीके से काम कर रहा है, तो हम मशीन के थ्रू अगर ह्यूमन के का काम करवा सकते हैं, वो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग जो है
वो भी इसी पर बेस्ड है, इसी पर आधारित है। ओके, Neuromorphic computing devices can work as efficiently as the human brain without acquiring large room for the placement of software. क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि हमारे पास अब पहले की तरह तो कंप्यूटर्स रहे नहीं, अब तो हम लैपटॉप्स, इतने छोटे छोटे लैपटॉप्स जो है वो लेकर चलते हैं, टैबलेट लेकर चलते हैं। तो ऐसे में एक ऐसा डिवाइस जिसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जो ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन नर्वस सिस्टम पर बेस्ड होकर काम कर सकता है, लेकिन हमें बहुत ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए उसके लिए, बहुत छोटे से स्पेस में हम इस तरह की कंप्यूटिंग जो है वो कर सकते हैं। ओके, वन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स that has rekindled the interest of scientists in neuromorphic computing is the development of artificial neural network model. ये क्या है अभी आगे आपको बताएंगे। क्या डेवलपमेंट करने के लिए? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मॉडल, दैट मीन्स अ मॉडल which is based on the human nervous system, a model that is based on the human nervous network or nervous system, but since it is produced artificially, it is called artificial neural network model, right? It is called artificial neural network model. Okay, what is the working mechanism? कैसे ये काम करता है? So the working mechanism of neuromorphic computer involves the use of artificial neural network made up of millions of artificial neurons similar to those in human brains. Now, if you remember your biology class, okay, I hope that you have studied it in biology class, that our whole nervous system is basically made up of unification of various kinds of neuron cells which are called neurons. So neurons are the particular units of nervous system, and so that if we are forming a computer that is assembled with certain kind of, or you can say millions of artificial neurons, millions of such artificial units which can be called artificial neurons. So wherever they work unitely, so they are working like a human brain, and that is why such network is basically called artificial neural network. Such network is called artificial neural network. And here the major thing is what? Now we discuss that actually this artificial neuron is based on what? It is made up of what? It is made up of that scandium nitride which I was talking about, right? पहले मैंने जिसके बारे में आपको बताया. These neurons pass signals to each other in layers, converting input into output through electric spikes and signals based on the architecture of spiking neural network. Particularly if you remember कि किस तरह से हमारे न्यूरॉन्स एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन को पास करते हैं, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं सर्टेन इलेक्ट्रिक इंपल्स प्रोड्यूस होता है, और उसके अलावा वहां पर न्यूरोट्रांसमीटर्स, सर्टेन केमिकल्स होते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक क्या होता है, जो सिग्नल है वो पास होता है। सेम यहां पर भी होगा कि जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स होंगे उनमें से एक के बाद दूसरे पर सिग्नल जो होगा वो पास किया जाएगा। ओके, दिस अलाउज द मशीन टू मिमिक द न्यूरोबायोलॉजिकल नेटवर्क इन द ह्यूमन ब्रेन and perform tasks efficiently and effectively such as visual recognition and data interpretation. So हम जिस तरीके से देखते हैं चीजों को, और चीजों को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि अच्छा ये चीज इस तरह से दिखाई दे रही है, चीजों को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये हमारे यूज का है, हमारे यूज का नहीं है, हमें एफर्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। सो उसी तरीके के विजुअल रिकग्निशन को ये परफॉर्म करेगा क्या? न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग के जरिए, ठीक है, या फिर डाटा इंटरप्रिटेशन भी करेगा, जो भी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं उसके अकॉर्डिंग जो डेटा वहां पर प्रोड्यूस होगा उसका इंटरप्रिटेशन भी होगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर जो है रिजल्ट प्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन ये रिजल्ट उस तरीके से नहीं होगा, प्रोग्राम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ये उसी समय जो भी डेटा प्रोवाइड किया जाएगा उस डेटा के अकॉर्डिंग ये जो है वो रिजल्ट वहां प्रोड्यूस करेगा। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ओके, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? Significance is that neuromorphic computing has opened the doors to better technology and rapid growth in
कंप्यूटर इंजीनियरिंग, क्योंकि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीजें आ गई, बट वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग. सो उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना. न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग हैज बीन अ रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट इन द रियम ऑफ artificial intelligence. Okay, with the help of one of the techniques of AI, that means artificial intelligence, neuromorphic computing has advanced the process of information processing and enabled computers to work with better and bigger technology, right? So artificial intelligence, which is a evolving technology in the field of science and technology, now it is expected that with the evolvement of this neuromorphic computing, now we will get more effective and more efficient work in the field of computer engineering, right? Okay, no, not yet, Suraj. I have not my own channel, or you can say the channel is there, but I have not actually started that channel yet. But uh, very soon I actually like to start that channel, and actually I am a little suspicious about the followers, because what I am telling you, what I am teaching you, I am a little suspicious that whether it will work or not. That is why I am a little hesitant about the starting of that channel. But I expect that very soon I will start that channel. Okay. Right. So this is what we have to know about neuromorphic computing. A very important feature here, and you have to you can be asked that what is neuromorphic computing, what kind of matter is used there to recognize or to be or to function the neuromorphic computing. Okay, so these kind of thing you have to remember. Okay, so the things I have discussed here today, I hope that it will be beneficial to you and you will understand all the things clearly. If you will not understand the things, I will provide you this PDF also, so you will get more information from there, and on the next Wednesday we will meet further. Thank you very much.